So when we talk about mean, I hope you all remember. In simple words, it is the sum of all values divided by total number of values. ठीक है? अगर हमारे पास कुछ sample है, so we can take the mean average of that sample space simply by adding all the values divided by number of values. So you will get something like this. Then we have something called as median. Median is the middle observation in a given set. Depending upon odd values or even values, आपका median अलग होता है थोड़ा सा. So if n is the number of observations, that means आपकी total sample space में n values हैं, and if n is odd, then obviously n plus 1 by 2 observation होगा आपका median, and if n is even, then it will be the average or mean of the n by 2 and n by 2 plus 1 observation. So like this. Again, let us take an example. For instance, यहाँ पर हमें 10 हमारे पास recorded values हैं. Now remember, firstly median निकालने के लिए you have to arrange in ascending order, in the order of magnitude. Then n के value के basis पे जितने हमारे पास number हैं, accordingly you will take out the median. तो यहाँ पर even है, that is why we will be selecting n by 2, that is fifth, n by 2 plus 1, that is sixth, and we will be taking the mean of these two values. So mean you already know by now, it's very simple. All right. Next, coming to the mode, it is about the number that occurs frequently, the most frequently occurring number. Again, if you have a set of data, जो हमारा number इसमें highest frequency से occur कर रहा है, for instance here it is 7, it has a frequency of 3, so your mode is 7. Then we come to variance. Variance is what? It is actually the measure that uses mean as a point of reference, कि आपकी values कितना deviate कर रही है with respect to mean. So if you have many values और वो values mean के काफी close है, right? Suppose you have some values and all those values are very close to the value of mean, so the variance will be small. और अगर mean से आपकी वो values काफी different है, then of course the variance is going to be large. So simple formula for variance is this. It is denoted by this. हम इसका भी alternate formula भी करेंगे. Don't worry. So very simply, it is sum of xi minus x bar, where x bar is your mean, xi is the value. So minus x bar whole square divided by n, where n obviously are your number of items or values in the set being considered. तो ये आपका वेरिएंस होता है. सो यू कैन सी हियर यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट ऑल द मीन वैल्यू फ्रॉम ऑल द वैल्यूज एंड टेक द स्क्वायर, और उनको ऐड करेंगे एंड वील डिवाइड बाय n. सो दिस विल गिव यू द वेरिएंस, एंड डिपेंडिंग ऑन दीज वैल्यूज एंड देयर रिलेशन विद द मीन, वेरिएंस स्मॉल भी हो सकता है, वेरिएंस लार्ज भी हो सकता है. सो इट विल बी बेसिकली अ मेजर कि कितनी वैल्यूज आपकी एक्चुअली स्प्रेड है फ्रॉम ईच अदर. अगर आपकी वैल्यूज बहुत ज्यादा डिफर कर रही हैं, सो ऑब्वियसली योर वेरिएंस इज गोइंग टू बी लार्ज, और अगर हमें हमारी वैल्यूज क्लोज टू ईच अदर, देन द वेरिएंस इज गोइंग टू बी स्मॉल. तो इससे आप पता लगा सकते हो कि हम जो भी एक सेट कंसिडर कर रहे हैं, जो भी हमारा सैंपल स्पेस है या जो भी हमारी वैल्यूज हैं रैंडम वेरिएबल्स की, हाउ क्लोज आर दे टू ईच अदर. Okay, so variance is the measure of that. So very simple example again, if we want to calculate the variance of these values, okay, then how do we calculate it? First of all, you can take out the mean. X bar is important. Mean हमारा अगर निकल गया, then you can calculate the variance using this formula, meaning you will take every value and you are going to subtract the mean from it. Now remember, it is square, तो अगर negative value भी आ रही है तो positive हो जाएगी, तो no issues. So you can see all the values have been subtracted from mean, or the mean has been subtracted from the values and squared, added and divided by the total number of values, 5. Right? So you will get some value like this. There is another measurement parameters that is used a lot, and that is standard deviation. So basically
it is quite similar to variance. Variance, if you remember, it is sigma square, right? It is a squared term. तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं, then we get standard deviation, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SD भी कहते हैं, right? So it is exactly the same thing, only इसका स्क्वायर रूट ले लिया, that's it. So after taking out this complete figure, then you will take out the square root, which will give you the standard deviation or SD. So when x is defined as the number of tails in 4 tosses of coin, सबसे पहले तो देखो मुझे 4 tosses of coin को देखना है to decide my sample space, and then I need to figure out the value of x, that is our random variable. So when we are having 4 tosses of coin, we can have 16 possible values, isn't it? So यहाँ पर मैंने सारी possible values यहाँ पर लिखी हुई हैं, but आपको न्यूमेरिकल करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए, you don't have to write all these values as such, ठीक है? You can either analyze it yourself, और अगर बहुत मुश्किल आपको लग रही है, then of course you can write all these values and check. So if you see here, what do we have? We have the sample space, the number of elements in sample space as 16. So ये सबको clear है? 2 raised power 4 will be equal to 16. Now if I talk about the random variable, that is x, it is defined as number of tails. तो अगर मैं इस sample space की बात करूं, x is the number of tails. तो किस किस में मेरे पास number of tails available है और क्या value मेरा x ले सकता है? So we will start with the value of x as 0, because in one of the outcomes ऐसा भी हो सकता है कि tail हो ही ना, right? So you can see here, यहाँ पर tail की value 0 है बिल्कुल in this, और ये एक ही होगा जहाँ पर आपकी tail की value 0 होगी, when all your coin tosses will have the head outcome. You will have a head when you toss it, ठीक है? So same way में x 0 मैंने ले लिया, then out of all these possible outcomes मेरे पास ये भी possible है कि x की value 1 हो, that means number of tails सिर्फ 1 हो, not 0, not 2, not 3, not 4. So ऐसे भी मेरे पास possibilities हैं, you can see here this one, this one, this one, alright. So ये मेरे ऐसे आउटकम्स हैं जहां पर मेरे x की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी. My random variables value is going to be 1. Okay. Then if we talk about two tails, since x is the number of tails, obviously इस impossible outcomes में मेरे पास दो tails भी हो सकते हैं. So you can see ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, and this is also 2. और एक possibility हो सकती है again x as 3. That means I will have 3 tosses. I mean 3 values of tails in the tosses. So you can find such values as well. एक ये मेरे पास outcome है, एक ये मेरे पास outcome है, and we have this outcome as well and this also. एक और possibility हो सकती है x की, ये सारे ही tails हो सकते हैं, ठीक है? Of course that possibility is going to be very less. तो आपके पास एक ही ऐसा outcome है जहाँ पर all tails है. Now if I talk about x equal to 5, अगर किसी के दिमाग में आया कि x 5 भी तो हो सकता है, नहीं, x 5 नहीं हो सकता, because we are restricted by our sample space, we are restricted by our system. I am only considering 4 tosses of a coin, so x, that is number of tails, can never be 5. That means my value is going from x0 till x4. It can take 0, 1, 2, 3, 4. Now remember, यहाँ पर हम discrete values consider कर रहे हैं. हमारे पास continuous functions भी हो सकते हैं. So there your random variable can take any infinite value. If you remember, हम लोगों ने category पढ़ी थी discrete and continuous. So if we talk about continuous, there your variable can take any value between a given range. Okay, it can take 2, 2.1, 2.555, 2.652, any value. But here we are considering discrete so that you understand the concept at least. So ये हमने देख लिया कि sample space पहले हमें define करना जरूरी है, and then we have to check for the values of our random variable.
जो भी यहाँ पर दे रखा है. इट कैन बी नॉइज इन द सिस्टम, इट कैन बी एनी अदर एक्सपेरिमेंट जिसमें आप कुछ बॉल्स देख रहे हो, रेड बॉल्स, ब्लू बॉल्स, मार्बल्स, वट एवर इट इज. ऑलराइट, सो एक्स की वैल्यूज अब हमें मिल गई. सो नाउ आई कैन टेक आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ these random variables having a particular value. ठीक है, सो जस्ट टेक केयर ऑफ द डिफरेंस. हम लोगों ने पहले जो कंसिडर किए थे, वी कंसिडर्ड सम इवेंट्स. probability of a tail, one tail, probability of two tails, probability of one tail after a head, और probability of a tail and a head. So यहाँ पर हमारे पास x defined है with the number of tails and we have seen the values from 0 to 4. अब मैं क्या करूँगा, I can take out the probability of this random variable for each value. यानी what is the probability that this random variable is going to have the value 0, यानी number of tails 0 होंगे. You can see here from the sample space it will be 1 by 16. What will be the probability that x value will be 1, यानी number of tails हमारे पास 1 होंगे. You can see here हमारे पास 4 possible outcomes है, 4 by 16 which will be equal to 1 by 4. Same way में px equal to 2 also we can find out. It will be this. You can just look at the sample space and do it. This is quite easy. X equal to 3 and x equal to 4. So what did we do here? हमने random variables की values देखी and then we are taking out the probability कि क्या probability है कि random variable वो एक particular value achieve करेगा. So this is how we analyze the random variable. या किसी भी system में अगर हमारे पास कुछ भी random function है, it is something that is not specifically defined, तो हम analyze ऐसे ही करते हैं. Alright, then we talk about probability distribution. Probability distribution क्या हुआ? If you see मेरे पास x की value 0 to 4 है, so probability distribution is what? 0 की probability is this, 1 की probability is this, 2 की probability is this, 3 की probability is this and 4 की probability is this. So अगर मैं एक इसका ग्राफ बनाऊं, right? So x axis पे आपकी ये values रहेंगी 0, 1, 2, 3, 4 and on y axis you are going to have the probability value. So you can see अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, probability that x is 0 हमारे पास 1 by 16, probability that x is 1 थोड़ा ज़्यादा होगा 1 by 4, then 3 by 8, 1 by 4 and 1 by 16. तो हमारे पास देखो एक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा इस टाइप का, where we will be able to say कि हाँ जो x की वैल्यू है, जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है, जो भी वैल्यू से अज्यूम कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटीज कुछ इस टाइप है या इस टाइप है, जो भी हमारा ग्राफ बनेगा. Alright, so this is how we will form the probability distribution of x. So first you need to take out the probabilities, get this table, obviously यही table है, and then plot it in the form of graph where x axis will have all the possible values, क्योंकि यहाँ पर discrete है तो मेरे पास 0 से 4 ही है, and y axis is going to have the probabilities. Again अगर ये continuous होगा then it will be a function जिसमें आपके x axis पे there will be a range and it can take any of those possible values, because if it is continuous then it can take any values, and again on the y axis you are going to have the probability, right? Now let us also check the other parts of the question, that is mean and variance. So if you remember mean and variance हम लोगों ने पढ़ा था, the simple formulas. For the purpose of random variable या for the purpose of probability हम थोड़े से इन formulas को modify करते हैं. They are actually one and the same formula, but जहाँ पर probability अब involved है, so we want कि हमारे जो calculations हो थोड़े probability के respect में हो. ये आप लोगों ने जब भी probability अपने स्कूल में पढ़ा होगा या मैथ्स में पढ़ा होगा, you must have studied these formulas. So of course mean हमारे पास क्या होता है, it is your sum of values divided by total number of values. But if we are going to take it in the terms of probability, then we are going to have this formula. This is going to be
sigma xi pi. That means xi is our random variable's value and pi will be the probability of that random variable where its value is equal to xi. तो अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ, मेरे पास देखो रैंडम वेरिएबल्स की ये पॉसिबल वैल्यूज है. सो आई एम गोइंग टू टेक एक्स आई इंटू पी आई. ऑब्वियसली अगर मैं जीरो लूंगा तो मेरे पास जो मल्टीप्लीकेशन आएगा दैट विल बी जीरो. सो आई हैव नॉट कंसिडर्ड हियर, बट ऑफ कोर्स टेक्निकली you can do this also. 0 into 1 by 16. Alright, that means जब मेरे random variable की value 0 है and its probability at that value is 1 by 16. xi into pi, ये मुझे यहाँ पर करना है. And sigma is what? You have to add all these xi into pi values for all the possible values of i. So where I here is going to be from 0 to 4. क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रीट है तो हम सिग्मा यूज कर रहे हैं. अगर हमारे पास कंटिन्यूस होता है देन वी यूज इंटीग्रेशन, बट दिस रिमेन्स सेम. ऑलराइट, so you can see here 0 into 1 by 16, then 1 into 1 by 4 plus 2 into 3 by 8 plus 3 into 1 by 4 and 4 into 1 by 16. Everything has been added together to get the mean. ओके, सो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारे पास कोई अब सिर्फ सेट ऑफ वैल्यूज नहीं है, वी हैव प्रोबेबिलिटीज आल्सो कि इसके अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या है. सो दिस इज हाउ वी विल टेक आउट द मीन when we have been given the probabilities of occurrence of certain values. All right, so this will be the mean calculation जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ex से भी. ऑफ कोर्स जो हमारा नॉर्मल मीन होता था हम उसको m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट नाउ वी आर टेकिंग इट टू अ स्लाइटली एडवांस लेवल क्योंकि हम डिफरेंट representations यूज कर रहे हैं. So ex, where x is the random variable, you will be taking out the mean in this form, right? Then let's come to the variance. So if you remember variance का हम लोगों ने इस टाइप का फॉर्मूला पढ़ा था. Okay, so this is a perfectly valid formula, xi minus x bar whole square by n, and of course standard deviation is square root of this. But again we are going to modify this formula for the random variable or for a set where you have probabilities involved. So for this purpose हम लोग जो variance consider करते हैं that is actually this. That means e of x square minus ex whole square. So if you remember ex हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, हमें अब क्या निकालना है, ex square निकालना है. So what is ex square? Basically ex ही है but उसका स्क्वायर हो गया. So ये जो हमने टर्म निकाला था इसको हमने स्क्वायर कर दिया. That's it. So you can see here जो हमारे पास जितने टर्म्स थे, ऑफ कोर्स जीरो वाला टर्म हमारे पास जीरो रहेगा, दैट्स व्हाई आई एम नॉट इंक्लूडेड इट हियर. रेस्ट फ्रॉम 1 to 4 हमारे पास यही वैल्यू रहेंगी. यू कैन सी हियर x की वैल्यू जब हमारे पास 1 है, सो 1 स्क्वायर इंटू 1/4 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3/8. तो हमारे पास क्या हो रहा है, x की वैल्यूज स्क्वायर हो रही है, these random variable values. तो ये हमारा क्या बन गया, ex square. सेम वे में आप देख सकते हो 2 square into 3/8, 3 square into 1/4 and 4 square into 1/16. So this is what is happening here. 2 square into 3/8, 3 square into 1/4 and 4 square into 1/16. आप सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, so you are going to get something like this. So this is going to be my ex square value, where random variables value we are squaring and multiplying with the probability. Same way like this, where I will vary from your random variables values, जितना भी उसकी रेंज है. यहाँ पर 0 to 4 है, सेम वे में हम यहाँ पर 0 to 4 करेंगे. यहाँ पर मैंने 0 नहीं यूज किया है, बट if you want I can show it to you here, something like this into, I think इसकी probability थी 1/16, right? So this
टर्म विल रिमेन 0, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें. So after obtaining this ex square term, simply what we have to do, variance we can calculate using this formula, meaning ex square minus ex, that means this mean the whole square. Alright, so if I solve this, what am I going to get? Vx is going to be ex square, that is 5, minus this whole square. So 2 whole square आपका क्या होगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं. So that is going to be 1. Alright, so this is the variance. If you have been asked the standard deviation, always after taking out the variance, you can square root it to get the value of SD.